Good morning, students. Today we will study lesson 2 of your SST book of class 4. Lesson's name is The Northern Mountains. Before we come to the text, let's see get set go and try to answer it. Students, let us see in the get set go. Circle the words that are related to the word mountain. So here there are few words are given which relates to the mountains. That words we have to circle it. So let's see. First, height, valley, peak, slope, range and snow. So students, these 6 words relates to the mountain. Okay, we can see the height of mountain, and there are valleys in the mountain, and there are peaks in the mountain, and there are also slope. Okay, and there are range, and there are snow in the mountain areas. Okay, students, now let us come to the text. Northern mountains include the Himalaya and the Karakoram mountain range, the Purvachal hill ranges. So students, northern mountains consist of these ranges, okay, like Himalayan, Karakoram and Purvachal range. Okay, now let us see the Himalayas. Himalayas stretch from Jammu and Kashmir to Arunachal Pradesh. Let us see in the map where it is. Look at here in the map. Himalaya is stretching from Jammu, Kashmir to Arunachal Pradesh. Arunachal Pradesh is here, students, okay, and Jammu Kashmir is here. Okay, so these areas are covered with Himalayas. Okay, now let us come to the text once again. Most peaks remain snow covered throughout the year. In Himalayas, most of the peaks, that means choti, shikhar. Okay, and these peaks, ये शिखर्स, पर्वत शिखर्स साल भर बर्फ से ढके रहती हैं. ओके, द माउंट एवरेस्ट in the Himalayas is the highest peak in the world. It lies on the border between Nepal and China. So students, you have most of the time heard that the highest mountain peak of the world is Mount Everest. So students, Mount Everest lies in the Himalayas. Okay, it lies in the Himalayas, and it is located on the border of Nepal and China. So let us see in the map once again, students. The Mount Everest is located here, and in the map you can see China is here and Nepal is here. Okay, so between these two countries border, the Mount Everest is located. Okay, students, now come back once again to the text. The Himalayas consist of 3 parallel ranges. They are, so students, these Himalayas are divided into 3 समांतर श्रृंखलाएं में बांटी गई है. ओके, तो ये हिमालय पर्वत को 3 पैरेलल पर्वत श्रृंखलाओं में बांटी गई है. फर्स्ट वन ग्रेटर हिमालय, सेकेंड मिडल हिमालय एंड थर्ड आउटर हिमालय. ग्रेटर हिमालय इज कॉल्ड हिमाद्री and middle Himalaya is called Himachal and outer Himalaya is called
Shivalik. So students, once again let us see in the map. For our knowledge we can divide these Himalaya mountains. For our knowledge we can partition it into three, okay, this part and this part. So students, these parts we can call it a Greater Himalaya, and this part we can call it Middle Himalaya, and this part we can call it Outer Himalaya, okay. Now let us see the Greater Himalaya. The Greater Himalaya is in the extreme north. It is the highest of the three ranges. It remains covered with snow throughout the year. Glaciers are found in these mountains. Many rivers such as Indus, Ganga, Yamuna and Brahmaputra originates from the glaciers. Kanchenjunga is a very high peak in this range. So students, once again let's see the map. So these parts are called Greater Himalaya, okay. So, and that Greater Himalaya lies extremely in the north side. ये एकदम से उत्तर की ओर स्थित है, ओके. और ग्रेटर हिमालय ये तीनों श्रृंखलाओं की सबसे ऊंची श्रृंखला है, ओके. और इस श्रृंखला में साल भर बर्फ गिरती है और साल भर बर्फ से ढकी रहती है. यहाँ पे कई हिमनद पाई जाती है और उन हिमनद से जैसे कि कई सारी नदियाँ निकलती हैं, जैसे कि इंडस, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र. ये सारी नदियाँ ग्रेटर हिमालय की पर्वत श्रेणियों से निकलती है, ओके. और इन नदियों में साल भर पानी भरा रहता है. बरसात में बारिश की पानी से भरा रहता है और गर्मियों में बर्फ़ के पिघलने से और बर्फ़ के पानी से ये नदियाँ भरी रहती है. और अभी देखते हैं हम इन नदियों को कहाँ कहाँ है, ओके. देखो ब्रह्मपुत्र यहाँ पे है स्थित और यमुना यही है, ये गंगा है और यहाँ पे इंडस है, ओके. ये सभी नदियाँ ग्रेटर हिमालय की पर्वत श्रृंखला से निकलती है, ओके. और ये इंडस नदी इधर बहती है, ओके. और गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र ये नॉर्थन प्लेन्स में बहती है और नॉर्थन प्लेन को उपजाऊ बनाती है, ओके. ओके, नाउ लेट्स कम एंड कंचनजंगा, ओके. कंचनजंगा ग्रेटर हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, शिखर है, ओके. नाउ लेट अस सी मिडल हिमालय. Middle Himalaya lies towards the south of the Greater Himalaya. It is lower in height than the Greater Himalaya. The mountain slopes are covered with thick forest of pine, fir and deodar. Hill stations such as Simla, Nainital and Darjeeling are situated here. So students, once again let us see the Middle Himalaya, okay. So in the beginning I told you, or I have divided into this part, three part, okay. So these areas we will call it Greater Himalaya, and these areas we can call it Middle Himalaya, and these areas we can call it Outer Himalaya. So students, Middle Himalaya lies towards the south of Greater Himalaya, okay. South of Greater Himalaya, this is called south direction, okay.
and middle Himalaya is lower than the greater Himalaya. Okay, mountain slopes are covered with thick forest, and in the middle Himalaya the mountain slopes, पहाड़ की जो ढलानें होती है वो घने जंगलों से ढकी होती है, और उन जंगलों में अधिकतर पाइन, फर और देवदार की पेड़ पाई जाती हैं। ओके, और इस मिडल हिमालय में कई पर्वत स्थान है जहाँ पे लोग पर्यटक या घूमने फिरने के लिए जाते हैं, जैसे कि शिमला हो गया, नैनीताल हो गया, दार्जिलिंग हो गया। ये सभी इलाकाएँ ये मिडल हिमालय में स्थित है, और ये इलाकाएँ पर्वत के ऊपर स्थित होने की वजह से ये ठंडा जगह होती है। ओके, जिसके वजह से लोग गर्मियों में यहाँ घूमने जाते हैं और अपना छुट्टी बिताने जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस कम एंड सी द थर्ड पार्ट, दैट इज आउटर हिमालय। ओके, आउटर हिमालय, once again it is located towards the south of middle Himalaya, just मिडल हिमालय के दक्षिण की ओर ये आउटर हिमालय है। इट इज़ द लोवेस्ट इन हाइट, और ये उन दोनों श्रृंखलाओं की अपेक्षा बहुत हाइट में छोटा है, कम है। ओके, दिस रेंज इज कवर्ड विथ फॉरेस्ट, मेनी वाइल्ड एनिमल्स आर फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। वंस अगेन स्टूडेंट्स, आउटर हिमालयस ऑल्सो covered with thick forest, and many wild animals, varieties of animals are found in the outer Himalayas. Okay, so students, for today only this much. Next part we will see in the next video. Okay, till then you keep on your studies and prepare for the next video. Thank you.